हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम क्यू कार्ड की बात करने वाले हैं। डिस्क्राइब अ पर्सन हु स्पीक अ फॉरेन लैंग्वेज वेल, विच लैंग्वेज डज ही और शी स्पीक। ओके गाइस, सो इसमें इस क्यू कार्ड में आपको उस बंदे को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ओके, और उसने वो लैंग्वेज कहाँ सीखी और किस रीज़न की वजह से सीखी वो भी एक्सप्लेन करना होता है। ओके, सो आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, लाइक इटालियन, जर्मन, बट मैंने फ्रेंच ली है बिकॉज आजकल फ्रेंच का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने वर्जन में प्लीज़ बनाइएगा इसे और मेरी ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। एंड नाउ आई विल शो यू अ सैम्पल फॉर 8.5 बैंड. Let's get started. Well, I know many people who speak international languages very well. Nowadays, everyone has known at least three languages, such as Hindi, English, and their native language like Punjabi, Haryanvi, and so on. However, here I would like to talk about my friend who speaks French quite frequently. She originally hails from India, but now she has been living in France for 8 years. She had completed her graduation from a well renowned college of France. So she had to learn this language to communicate with the native students. Last year, she visited India to attend the wedding function, and I was so surprised to see her because she was looking gorgeous. I think the reason was she changed her hairstyle, and moreover, in the past she preferred to wear simple clothes, but now she likes some bright as well as funky clothes. Apart from it, one thing that was shocking for me was she was talking over the phone with her boyfriend in the French language, and she spoke French just like a local people of France. It was really a good experience to hear French from her mouth. Lovingly, she tried to teach me some words of French language, but unfortunately, she did not have much time in India due to functions. So she promised me that next time when she will come, then she'll definitely teach me some basic words. All in all, she's a great person with multilinguistic skills, and she gained so much success because of this skill. ओके गाइज, सो दिस वाज इट। और मैंने इस क्यू कार्ड में क्या किया है, मैंने इस क्यू कार्ड में हर पॉइंट एक्सप्लेन किया है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है और उसने क्यों सीखी ये रीज़न भी एक्सप्लेन किया है, और बाकी लैंग्वेज के बारे में बोला है मैंने। ओके, सो सिमिलरली आप कोई भी लैंग्वेज को लेके ये सिंपल चीज़ें एक्सप्लेन करके आराम से अपना 2 से 3 मिनट का क्यू कार्ड बना सकते हो। ओके, सो आपकी स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। अगर आप चाहते हो कि मैं आप क्यू कार्ड्स आपके बनाए हुए क्यू कार्ड्स में चेक करूं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, और जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।